to that role. कई लोग मैंने देखा है, मैं मिलने आते हैं, उनको विजिटिंग कार्ड आता है, उस पर 10-15 पोजीशंस लिखी होंगी. कोई व्हाट्सएप आएगा तो अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा होगा, 20 पोजीशंस लिखी. अब उन पोजीशंस पे अगर आप जस्टिस अगर आप कर रहे हो तो वाओ, यू आर अ सुपर ह्यूमन, आई वुड लव दैट. बट अगर आप वो सिर्फ आपने जहाँ जहाँ से आपको मौका मिला आपने कहा कि हाँ मेरे को इसमें भी सेक्रेटरी बना दो, मेरे को इसमें जॉइंट सेक्रेटरी बना दो, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है. सो दैट इज समथिंग आई वुड एनीथिंग कैन गेट टू योर हेड. यस. Even if you're just lazing at home, so you can get this high also. Dekho, I'm so lucky that I'm just lazing around. So that's what I'm saying. To have a balanced mind, if that would have gone to my head, or I was feeling proud of those things, or I was showing off those things, so people will stop helping me also. Of course. Because I am basically somebody who tries reach out for somebody who needs help to the person who can help. तो मेरे को बहुत बार लोग पूछते हैं कि आप ये क्यों करते हो, कि इसमें क्या मिलता है. तो मैं अब हर किसी को लगता है कि यार शायद इसका पॉलिटिकल एम्बिशन होगा, हर किसी को लगता है कि इसको कुछ फेमस रहने का शौक होगा, या मतलब ब्ला ब्ला ब्ला. एवरीबडी हैज़ देयर ओन, जिसकी जितनी सोच है उस हिसाब से सोचता है. तो मैं हमेशा कहता हूँ यार कि मैं सच बोलता हूँ, आप लोग मानोगे नहीं. मैं कहा मेरे को एक्चुअली में किक मिलती है, मेरे को एक्चुअली ये दुआएं बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगती है, और मेरे को लगता है कि यार कि मैं उस बिलीफ के साथ जाना चाहता हूँ कि जब मेरे को बाद में भी मेरे बाद लोग याद करें अगर आज करण होता तो हमें ये 1 मिनट में काम हो जाता. सो आई वॉन्ट टू बिल्ड दैट बिलीव इन पीपल दैट येस आई डिड मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ्स, एंड आई वॉज हियर सेल्फलेसली. आई वॉज नॉट हियर विद अ पर्पस. Right, so thank you so much for being on the Jantak show. Thank you. You have been on our list काफ़ी देर से because we had heard a lot about you, and we'd love to discuss your journey, where you started from and how successful you are right now. So I wanted to start because you have the Limca Book of Record that you are the youngest Sarpanch in the history, and you contested in 1998, right? Yeah. So I want to take you back to 1998 and understand ki, what was your perspective back in the day and why did you contest for Sarpanch? No, actually, I have always been inclined to be trying to help others. I did my bit, whatever I could do while I was in hostel. I was in Mayo College, Ajmer. And plus somehow, that thing is, I think, inborn with me that I just feel that कि यार कि अगर मेरा कुछ किसी को कहने से या कुछ एफर्ट करने से अगर किसी की कोई हेल्प हो सके, कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके, भला हो सके, तो वाई नॉट. सो दैट हैज़ ऑलवेज बीन द इंटेंशन. तो वही जब मैं अपने होम टाउन, आई बिलोंग टू फाजिलका, ये इंडो पाक बॉर्डर में है पंजाब में. तो मैं जब आई happened to go after my school and my college there. So we have our agricultural lands in the village, and our family has been really connected to the village and the villages around. My grandfather also has been a philanthropist and extremely service oriented for the common man. So as my dad tried to do his bit. So when I went back home, naturally it's a small town. तो आई थिंक वहाँ पे एक दिल भी इस चीज़ से लगता था कि लोग पीपल लुक अप टू यू फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड यू ऑल्सो ट्राई डिलीवर सो दैट यू कीप दैट बिलीफ अलाइव कि इस आदमी को उम्मीद है मेरे से. तो उसकी तो बस दैट वाज द होल थिंग. एंड देन पीपल केम इन, सर इलेक्शंस आर कमिंग, why don't you only become a Sarpanch? Okay. And I also somehow had this that I could probably this could be a good start, and could be the youngest in my area, joining this journey of to help and serve people. But I never knew that it's going to be a Limca book record for the youngest in the country at that time. So yeah, that was a good journey, and it's still going on. But I'm still very attached to my village. I was there yesterday also for 2 days. Yeah, so it's been going on. But at a very young age of 21,
what made you not, because you went to DAV college in Chandigarh for your 11th and 12th, so what made you go back to Fazilka and not live the life that's there in Chandigarh? Like what was your mindset back then? Yeah, I think the 2-3 reasons for that. One was that there was something going in the family at that time, so I wanted to be there with my parents so that I could help them out in the business and other stuff. And secondly, someone I am also a very people's man kind of a person, so I also enjoy that semi-urban, rural background. So and it's always good to be amongst your own people, amongst your own friends, other than being at that time. Probably I was limited to a very few friends here in college, so I was inclined to go back to the roots, and in fact I was very, very happy there till the time my dad convinced me that you move to Chandigarh and probably for the next generations things could be better and all that. But honestly, given a choice, I always look forward going back. So as I told, I come from Malod, which is very close to Fazilka, and living in Chandigarh since 7 years, I understand a lot of your hometown gives you a lot of values, and the feeling that you're connected to something, that you have a bigger purpose to serve, to give back to the community. What were your values? What has Fazilka given you? What are the values that you got from your hometown and still live by? Firstly, I think as this Punjabiyat itself teaches you a lot. Yeah. हमने घर पे प्रकाश भी कराया हुआ है, so I have a lot of respect and belief in Guru Granth Sahib Ji. So I think that Seva Bhav is a part of DNA of every Punjabi, and so same with me as well. But also I would say that I generally do get a very I would say satisfying kick whenever I'm able to serve somebody, and that's the reason I have been always tried to be in the front wherever there is need for anything and everything, whether it was way back in 98 or whether we are in 22. So वो कहते हैं ना, आदमी की फितरत नहीं कभी बदलती, so वो चीज़ I've kept that alive in me, and in fact I think I feel it's getting stronger, and it's making me a better person every single day that passes by. You have been a philanthropist. You have been a very active part in the community through your foundation and also helping with Mr. Sonu Sood. With all the education that's coming from Plaksha University, why not contest for something bigger, like maybe an MLA or MP? Actually, what I feel is that today anybody can reach out to me. I can reach out to anybody. You're very accessible. And everybody feels that कि इस इंसान का कोई motive नहीं है, so they also come forward to help me with this service to people. अगर आप you contest elections or whatever, so you probably firstly I would say आपका एक जो sphere है उसको आप डिवाइड कर देते हो कि आपने ये लोग मेरे हैं, ये लोग मेरे नहीं हैं. दैट्स बाय रूल ऑफ द गेम. इट्स नॉट दैट कि अगर मैं नहीं भी करना चाहूँ तब भी एक वो परसेप्शन बन जाती है. एंड सेकेंडली आई थिंक आई एम इफ नॉट मोर, आई थिंक आई एम बीइंग equally able to do whatever I want to do, if whether what I am today or what I am MLA or what I am MP, because I don't think I need any chair or any position to serve people. It's only the intention that you need. It's only that belief that you can do it, and especially when it's done without any, I would say, स्वार्थ या कोई भी ऐसा आपका सेल्फ मोटिव, तो आपको बाबा जी भी हमेशा ब्लेसिंग्स ज़्यादा देते हैं. एंड आई थिंक आई हैव हिम बाय माई साइड, so I don't think I need a chair or something to facilitate my dreams. And more or less मैं हमेशा कहता हूँ कि ना,
अगर कभी भी किसी फिलंथ्रॉपी को या किसी सेवा को डायरेक्टली पॉलिटिक्स के साथ नहीं अटैच करना चाहिए, बिकॉज पहले तो हो सकता है शायद मैं भी जैसे आप बात कर रहे हैं वैसे सोचता हूँगा, पर जब से मैं अपने ये प्लक्षा एक एफर्ट है हमारा जो हम यूनिवर्सिटी सेटअप कर रहे हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास है, उसके साथ अब अटैच हुआ तो मेरी जो सारी फाउंडर्स जो ऑन बोर्ड हैं, जो शोका यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स भी हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ देम आई हैव सीन these gentlemen are phenomenal. Absolutely. मतलब they have that kind of intent to give it back to society which is like unbelievable. And मतलब to और उनको किसी से मतलब कुछ और नहीं है, उनको सिर्फ ये है कि जो हमने God has been kind to us, we have to make a better India. So and those people don't even मतलब I would say I'm a semi-political guy, but those are the purely businessmen, all of them. Yeah. So it's I would say wrong to say that कि every philanthropy or every service should land in with politics as a career. Yeah. But yes, जिस दिन मेरे को लगा कि शायद मैं कुछ और हासिल करके कोई और कुर्सी लेके I will be able to help people more. So then nothing can stop me. But currently I am very satisfied, and I think I'm able to do equal justice for my people with chair or without chair. I have a few observations about you. The first one, so ये मेरा next question भी होना था, but you already answered. I wanted to ask you about जो positions होती हैं, what do they bring to you, like what difference can you make with the chair or without a chair? But you have already answered that. No, I'll tell you, उसमें there is one more way to look at it is, some people do need positions, right, to probably but it's about your own personality. I think the way I am, उसमें I can do a lot of things which don't matter to me whether I'm holding a position or not, but to some extent to build up this journey till reach here, so I'm sure some positions would have helped me also. So I would never say लोगों को जरूर अच्छी organizations, अच्छे efforts के साथ जुड़ना चाहिए, leadership roles लेने चाहिए. Because I also have been chairman of the PhD Chamber of Commerce and Industry for Punjab. Now I'm the co-chair. So, all these things definitely, I'm a founder in Plaksha University. So these are all kind of your identities which but I would say bring responsibility on your shoulders, and also when you put forward, like as a role in PhD, we were the catalyst between the industry and the government. So of course, had I not been in that position, so my reaching out to the government for whatever feedbacks we keep getting from the industry would be not of that much meaning to them what it was as it's coming from a chairman PhD chamber. So I think positions do matter, but political positions was what I was answering to earlier. तो उसमें मेरे को अभी नहीं लगता कि मेरे को MLA या MP बन के ही मैं वो काम कर सकता हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ. But otherwise, yes, as far as these bodies are concerned, which are honorary bodies and honorary positions where you are from your pocket, you're spending the money, you're giving your time. So I'm sure these things, whoever gets leadership opportunities or team member opportunities, but it should not be put on you. आपको बोझ नहीं लगना चाहिए. Absolutely. मतलब वो आप डिजर्व करते हो, बट आप चाहते भी हो. इंटेंट होना चाहिए. आपका इंटेंट होना चाहिए कि यस आई कैन डू जस्टिस टू दैट रोल. कई लोग मैंने देखा है, मैं मिलने आते हैं, उनको विजिटिंग कार्ड आता है, उस पर 10-15 पोजीशंस लिखी होंगी. कोई व्हाट्सएप आएगा तो अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा होगा, 20 पोजीशंस लिखी. अब उन पोजीशंस पे अगर आप जस्टिस अगर आप कर रहे हो तो वाओ, यू आर अ सुपर ह्यूमन, आई वुड लव दैट. बट अगर आप वो सिर्फ आपने जहाँ जहाँ से आपको मौका मिला आपने कहा कि हाँ मेरे को इसमें भी सेक्रेटरी बना दो, मेरे को इसमें जॉइंट सेक्रेटरी बना दो, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है. सो दैट इज समथिंग आई वुड स्ट्रांगली अपोज. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो पोजीशंस है दे जस्ट एम्पलीफाई योर एफर्ट्स फॉर द कॉज. इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट समथिंग, लाइक यू आर पैशनेट अबाउट हेल्पिंग पीपल, आई थिंक a position would amplify the productivity that you get when you help people. और सर मेरी दूसरी observation यही थी, and you spoke about that as well, that you don't need any position to help out help people out.
you seem like a very secure person, you know, who is very secure, very confident in his own body, very confident in his mind. And I know a lot of people who are not that. उनको एक you know, they need a position of power to feel good about themselves, right? So what do you think about that? सर अगर पोजीशन पावर दे सकती, चेयर पावर दे सकती, फिर तो आई वुड से कि जो पावर में बैठे हो वो कभी उस they would have started feeling like gods. So I think कुछ लोग they feel, some of them they but I think but I think that is not the right thing to do. I feel कि सिक्योर या कॉन्फिडेंट आप होते हो जब अगर अब वो आपको लोगों की ब्लेसिंग्स बनाती है. Absolutely. Nor a chair can give you, nor a position can give you, nor nobody can give you. So this confidence that I have in myself is because मेरे को पता है कि I make the effort from the heart. So if वो कहते हैं ना, जिस चीज़ को भी आप शिद्दत से करने की कोशिश करोगे वो हो ही नहीं सकता डिलीवर ना हो. So that's my belief. तो मैं तो मतलब अगर कोई there is some task ahead of me, तो मैं कहता मतलब जान निकाल देता हूँ पीछे पढ़ के कि सर ये प्लीज़ ये मैम ये करना है. या अब जैसे कोरोना था तो हमें अगर कोई रीच आउट करता था तो हम किसी भी लेवल तक, मतलब आई नेवर यूज्ड टू थिंक एनीवन टू हेल्प समवन whom I also don't know. Right. So और जिसको फ़ोन भी करते थे उनको भी लगता था यार ये आदमी अपने लिए थोड़ा या अपने रिश्तेदार के लिए थोड़ा बोल रहा है, he is just calling for an anonymous guy. अब मैं आपको मतलब I'll tell you how this power in yourself comes and how this confidence comes. Maybe a fortnight back there was some ceremony I had to do, so my family told me that कि आपको आज नाडा साहब जी जाना है गुरुद्वारा साहब. तो पहला तो थॉट आया मेरा अच्छा कि मेरे को नाडा साहब जाना है, सो आई हैड टू प्लान माई डे अकॉर्डिंगली. तो जब मैं वहाँ जा रहा था ना तो मैं अपने माइंड में वैसे सोचा था यार कि बाकी यार कि इतना ऑस्पिशियस गुरुद्वारा साहब हमारे पास है, पर हम आते बहुत कम है. राइट. I think I must have been going there after 5, 6, 7, maybe 10 years. I don't even remember. I think 5 years for sure. So I went there because अब चंडीगढ़ रहते हैं, सेक्टर 8, सेक्टर 34 हो लेते हैं, बाकी घर पे रोज हम पाठ करते हैं. So now I go there. Okay. And I enter. There were about, as usual, was packed. A lot of people there. I come out. A young boy comes and holds my hand. Wow. And says कि सर आप करण गिलोत्रा हो? मैं कहा हाँ जी. तो that time I saw on the phone कि वो already मेरा Twitter account खोल के बैठा था. Probably he had seen me, so he was just trying to make sure from the photograph. Yeah. तो मैं कहा हाँ जी मैं ही हूँ जी करण. You know what that boy tells me? Standing in the Gurudwara. कहता सर मैं बिहार से आया हूँ, रांची से. मैं आज से कुछ महीनों पहले 6-8 महीने में कोई एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने आपको ट्वीट किया था, मेरे मदर की सर्जरी होनी थी तो हमें हेल्प चाहिए थी. तो वो आपने मेरे को रिप्लाई किया था और डॉक्टर का नाम और नंबर भेजा था और आपने कहा था कि तुम बस चंडीगढ़ आ जाओ, बाकी सब यहाँ पे हो जाएगा, तुम्हारा इलाज सब मुफ्त होगा और अपना आराम से करा के जाओ. तो हम तब करवाने आए थे. तो तब हमें डॉक्टर ने बोला था कि 6 महीने बाद आके फिर से चेकअप होना है. तो आज हम वो चेकअप कराने आ रहे थे चंडीगढ़. तो मेरे को अपनी माँ को मैं यहाँ गुरुद्वारा साहब लेके आया और मैंने सोचा उनको यहाँ पर मत्था टिकवा दूँ और उनको लंगर खिलवा दूँ. तो देखिए मेरे को कहता है कि हम तो आए थे यहाँ चेकअप कराने और बाबा जी को और अभी आप मिल गए. तो मतलब अब दिस वॉज अ नॉर्मल प्रोसेस फॉर अस कि मैं कोई भी रीच आउट कर रहा है हम उसको हेल्प कर रहे हैं. हमें तो पता ही नहीं, किसी को जानते नहीं ना, कभी किसी का फिर से उसको कुछ अगर हम किसी और सिटी जा रहे थे हमने तो ये इतनी कभी कि हमने वहाँ के जो हमारे जो एक नेटवर्क बना उसको हमने कभी बोला. बट आई एम सेइंग वो फीलिंग एक ऐसी थी कि मेरे को ऐसा लगा यार कि देखो ये होती हैं ब्लेसिंग्स. और ये चीज़ें का कोई मुकाबला नहीं है. आप अगर दुनिया में ये दुआएं नहीं कमा सके तो मेरे को लगता है फिर आप कुछ नहीं कमा सकते.
So you have been very active in the COVID relief process. Anyone who reaches out to you, you have been very, very, very helpful. तो मैं ये तो नहीं कहूँगा anybody, but yes, we have tried to help Yes, the most as we much as can. we can. Yeah. So my question is related to that. So abhi the story that you just narrated, directly that person is comparing you with God, right? And I'm sure. नहीं देखो, it's not about comparing, it's about that के I felt that के मेरे को 5-7 साल बाद बाबा जी ने गुरुद्वारे बुलाया, नाडा साहब जी, और वहाँ पर मेरे को एक अपना चमत्कार दिखाया कि और उस चीज़ का यकीन दिलाया कि बेटे आप ठीक राह पे चल रहे हो, प्लीज़ फॉलो द सेम पाथ दैट यू आर डूइंग अ गुड जॉब, यू आर डूइंग द राइट जॉब. तो वो चीज़ मैं जब वहाँ से वापस निकला तो मेरे अंदर और बिलीव, मेरे को घर वाले भी अगर कभी कहते हैं ना कि आप सारा दिन यही काम करते हो, मैं अब तो और ज़्यादा करूँगा, you get that feel. So मेरा क्वेश्चन है कि बिकॉज आपके पास बहुत पोजीशंस भी हैं, you have been helping people out, and anyone you help out, I'm sure they hold you in very high regard, right? So अब जैसे उस लड़के की आपने स्टोरी बताई, how do you ensure कि this feeling does not get the better part of you? How do you ensure कि you stay grounded? Well, in terms of you say कि it doesn't get onto my head? Yes. So anything can get to your head. Yes. Huh? Yeah. Even if you're just lazing at home, so you can get this high also. Like, okay, देखो, I'm so lucky that I'm just lazing around. Mm-hmm. So that's what I'm saying. कि to have a balanced mind, अगर if that would have gone to my head, or I was feeling proud of those things, or I was showing off those things, so people will stop helping me also. Of course. Because I am basically somebody who tries reach out for somebody who needs help to the person who can help. Yeah. Because everything I can't do also. You're the bridge. There are few things that I can deliver, but few things I need other holding hands also with me to support. अब किसी का अगर कोई गवर्नमेंट काम है तो नेचुरली वो मैं किसी ऑफिशियल को ही रिक्वेस्ट करके करा सकता हूँ, मैं खुद नहीं कर सकता. So of course they all are friends, they're just like family, so they also respect that के what he's trying to do is without any interest, मतलब इसको कोई अपना उसमें मोटिव नहीं है. So अगर वो कहीं पे भी वो चीज़ आपको जब सेंस होएगी तो आप वो ऑटोमेटिकली आपकी चेन टूट जाएगी. अब जैसे आई ऑल्सो नो ऑफ फ्यू पीपल हु काइंड ऑफ गेट this high in their mind, so you slowly start staying away. Right. You get used to it, or you it's a way of life. Okay. मतलब आप अगर आपने किसी की मदद की और आपने कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की और अगर उसका अहंकार ही आप में चला गया तो फिर व्हाट्स द पॉइंट. Right. आपको तो उल्टा यू शुड फील ब्लेस्ड, लाइक आई फील ब्लेस्ड every single second that I live, that God has chosen me and I'm just doing the duty He has given me. There is nothing that Karan Gilhotra is doing, there is just something Babaji has assigned the task to me and I'm just trying to do justice. And मैं हमेशा मेरे को when I was small also, teachers used to ask me, and till date people ask me कि why, मतलब it needs a lot of time, it needs money, it needs to, I would say, use your network. At times you want to save all those things for the last time or the time that you would need, but I open up every possible channel to be of help to others. तो मेरे को बहुत बार लोग पूछते हैं कि आप ये क्यों करते हो, कि इसमें क्या मिलता है. कि मैं अब हर किसी को लगता है कि यार शायद इसका पॉलिटिकल एम्बिशन होगा, हर किसी को लगता है कि इसको कुछ अपना फेमस रहने का शौक होगा, या मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीबडी हैज़ देयर ओन, जिसकी जितनी सोच है उस हिसाब से सोचता है. तो मैं हमेशा कहता हूँ यार कि मैं सच बोलता हूँ आप लोग मानोगे नहीं. मैं मेरे को एक्चुअली में किक मिलती है, मेरे को एक्चुअली ये दुआएं बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगती है, और मेरे को लगता है कि यार कि मैं उस बिलीफ के साथ जाना चाहता हूँ कि जब मेरे को बाद में भी मेरे बाद लोग याद करें अगर आज करण होता तो हमें ये 1 मिनट में काम हो जाता. सो आई वॉन्ट टू बिल्ड दैट बिलीफ इन पीपल दैट येस आई डिड मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ्स एंड आई वॉज हेयर सेल्फलेसली, आई वॉज नॉट हेयर विद अ पर्पस. तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जितनी मेरी उम्र है उसके बाद जब भी
इस जर्नी का एंड होए तो पीपल शुड टॉक पॉजिटिव अबाउट मी, थिंक पॉजिटिव अबाउट मी एंड शुड ऑल्सो मिस मी. That's a beautiful answer, beautiful thought, sir. What I think that you consider yourself as a tool of God, कि whatever you do is God doing that through you. You are just a medium for that. Absolutely. तो मैं और सोनू भाई जब बातें करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई देखो मतलब कितना बाबा जी की मेहर है हम पे कि इतनी पॉपुलेशन होती है, किसी को भी भगवान चूज कर सकता, कोई उसकी मर्जी के बिना तो कुछ कर नहीं सकता. तो हमें ये सेवा का मौका मिला और हम अपने उसको बेस्ट तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं. सो आई थिंक आप अपनी प्रिविलेज को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर रहे हो. एंड समथिंग दैट यू सेड कि यू फील ग्रैटिट्यूड एवरी मोमेंट दैट गॉड हैज़ चोजन यू. मेरी लास्ट ऑब्जर्वेशन आपके लिए थी कि यू सीम लाइक अ वेरी रिलीजियस, वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. इज दिस समथिंग दैट यू प्रैक्टिस कॉन्शियसली? नहीं, आई थिंक or is it just the Punjabiyat and the it's basically values, Punjabiyat, the way जो देखा, जो समझा, जिंदगी ने सिखाया, it's all from that. It's not that कि कोई I'm very but I'm a God fearing man. मैं रोज सुबह उठ के पाठ करता हूँ, बाबा जी के वहाँ मत्था टेकता हूँ. But it's not that कि there are people far more religious than me. But I think मेरे मानने में जो मैं काम करता हूँ वो भी रिलीजियस ही है. अगर किसी की मदद कर सकूँ तो मेरे को उसमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है. तो मेरे को बट दैट इज़ ह्यूमैनिटी इज़ माई रिलीजन. सो आई लव फॉलोइंग दैट विद प्योर इंटेंट. सो समथिंग दैट इज सेड कि लोग सोचते हैं कि इसका कोई पॉलिटिकल मोटिव है या there's something in it for Karan, तभी he is doing this, right? तभी he is helping out people. I'm sure you must get a lot of criticism from people. मैंने तो आपको बोला I have a motive. मेरे को किक मिलती है, so that's my motive. But हाँ मतलब it's not related to any external objective. वो आपके innate desire to help people. ऐसे है people who think that कि इसका motive है. How do you handle that? मेरा question no, it doesn't bother me. Oh wow. Because actually nothing bothers me because I don't know if you've seen that movie Guru, Abhishek Bachchan, yes. जो अंबानी साहब के स्टोरी पर है. तो उसमें एक डायलॉग होता है, कहते कि अगर दुनिया आपकी बातें कर रही है, समझो आप तरक्की कर रहे हो. सो आई जस्ट डोंट बॉदर अबाउट व्हाट पीपल हैव टू से. बट ऑल आई नो इज जो कुछ भी बोलता हो वो एक बात जरूर बोलता है कि ही इज़ अ हेल्पफुल मैन. सो दैट्स ऑल. अब वो उसको किसी मोटिव से लिंक करे, किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से लिंक करे, एक्सटर्नल पोजीशन से लिंक करे, इट्स वंस थिंकिंग. इट्स नॉट दे आर थिंकिंग अबाउट मी, दे आर थिंकिंग व्हाट दे वुड वांट टू डू इफ दे वर डूइंग. उनका क्या रिजल्ट ओरिएंटेड होगा. तो इसलिए मेरे को बिल्कुल कोई चीज़ बॉदर नहीं करती. मेरे को हाँ ये जो बॉदर करेगा जिस दिन आई probably would not be able to do something which I had belief in that I could do for somebody. So that is something that can bother me. Right, sir. So you're also the co-chair for PhD, the Chambers of Commerce and Industry. So which acts as a catalyst for the industry and the government, right? Right now, Punjab has a lot of debt. I think one of the most debtful state of India. So I want to know कि where do you come in? Like how do you ensure that you actually act as a catalyst for for the industry? इसमें there is a very limited role that we can play. Okay. It's about a journal. देखो we are a border state. We have faced terrorism and things like that. Yeah. So एक general perception है amongst industry that, and plus the political scenario has been here something like that कि where too many people are not have been here, but all the recent governments in the last 10-15 years have been doing good job and industries are coming slowly. So I'm sure it's a long journey. It's not that कि ये चीज़ overnight हो सकती है. So हमारा तो एक limited role ये रहता है that कि we keep sharing whatever the industry feels or wishes to the system and then try follow up maximum with them कि what all is doable, because हर चीज़ तो it's not, because there are some boundaries which even government has to operate in.
So we just try mix and match whatever best possible, and I'm sure Punjab is on a upward swing now. मतलब आई थिंक प्रॉस्पेरिटी हम खुद ही अपने आसपास देखते हैं कि सारे मौजा लेंदे ने रोज पार्टियां करते हैं, तो आई एम श्योर कि मतलब द वर्क इज ऑल्सो गोइंग ऑन वेल. सो देखो वन हैज टू बी सेटिस्फाइड इन लाइफ. अब वी कांट ऑल द टाइम कंपेयर कि हम पंजाब गुजरात क्यों नहीं बनता या पंजाब बस किसी साउथ की स्टेट क्यों नहीं बनता. एवरी स्टेट हैज देयर ओन कल्चर. अब मेरे को तो नहीं लगता कि मैं गुजरात वहाँ तमिलनाडु जाके रह सकता हूँ. आई लव पंजाब. सो डू आई. सर जो मेरे हिसाब से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं. वन इज़ कम्युनिटी, सेकंड इज़ एजुकेशन, थर्ड इज़ बिजनेस. तो यू हैव अ रोल इन ऑल दीज 3, राइट? You have been a very active part in helping the community. You have been a part in the you have a huge part in the business, and then you're also revolutionizing education through Plaksha University, right? So Plaksha, again, I'll tell you, all my other founders, they are like, I have to look up to them because they're so much more and more learned than me. I am aware. And so much more. As far as to give it back to society in the field of education. In fact, I feel blessed, honored, privileged that they invited me to join them and sit amongst them of that profile of people. So frankly speaking, when the topic of education starts, I normally finger on the lip because I can't contribute there. I can contribute in lot many other things, but purely the education part, because they're all, from IIT, Stanford, God knows. So they can do that much better. It's going to run better, become a better brand if I don't interfere in the education part. I think that's a humility, that's a modesty. No. It's a fact because जो चीज़ आपको आती नहीं. अब I'm not an engineer. It's a technical university. Yeah. So I मतलब core ही नहीं मिलता. I can. There are so many other. Education is just one part. Yeah. There are 99 other parts. So I'm just saying कि but जो brand building जिस चीज़ से होनी है वो कभी जो campus कैसा बना है या क्या है वो education program से होनी है. That is the backbone. Today our aim is in the next 3 to 5 years it should be the top university of this country. When somebody thinks of technical, they should not think of going to US or they should think of coming to Plaksha. So that's the vision the founders team has, and our vice chancellor Saab and his faculty team has. So just trying to do that. But for me personally, it's been a great journey so far, and I still feel I owe it to all those founders who were conceptualizing this, and they gave me the chance to be a part of them. So it's a great feel. So I do agree with you. Actually, I had an opportunity to speak with Mr. Pranav a few months ago, and Mr. Vineet as well. I have been. He was supposed to be on the podcast as well. So what again an observation for you, that you are an avid learner. How you said that when it comes to the technical part of it, you just have a finger on your lip. So I'm sure you learn a lot every day. कई चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस भी होती है. सिर्फ ऊपर निकल जाती है. यू नीड टू. सो अगेन कुछ काम बाकी लोग भी करते रहे ना. अब सब कुछ मैंने थोड़ा मतलब यूनिवर्सिटी में एवरीबडी हैज़ टू कंट्रीब्यूट. एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग एंड दे आर डूइंग इट मच बेटर देन मी. So why and plus, but there's no difference if X is doing, Y is doing X. It's a philanthropy project. We are all doing it as a service. So everybody should come forward in the role which the best they can do. Okay. Now this is something I cannot do, and I have never felt low or bad to admit something I can't do. But in any field, not just about Plaksha. मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता. So there is no stress on that for me. There is acceptance in you. Acceptance. So अब जो चीज़ मैं नहीं कर सकता भैया, whatever circumstances I had at that time or vision I had, I couldn't I would say educate the way probably my other friends did, because my focus मैं थोड़ा ये सरपंची में बिजी हो गया था.
So एक वो गाड़ी ट्रैक से उतर गई थी थोड़ी, तो but yes, but I think what I have achieved is again a lot of them could feel that wow, Karan, you know, so it's like, but grass is greener on the other side always. Plus, I think it's the road less traveled wali story. You took the road that was less traveled. But so what I think at the end the roads, meet at one point where you all are chasing single vision, right? Yeah. And I think the most important with any service or any task is you should do what you love doing the most. My dad is a pure workaholic. His day starts at 6, ends at 9, 8. Wow. मेरा तो इससे रिवर्स भी नहीं है. So it is totally different. So but what I do, I'm just extremely happy and satisfied in that. So I see no reason to change for anybody, to correct something. There is no need, I feel. हाँ, लोगों को कुछ मेरे में गलत दिखता होगा तो ठीक है, that's the way I am. So last 2 questions from my side for you. When you join a founder's team, you infuse your personal values into the business model, or when you decide the values of an organization, right? So what's been your personal, maybe top 3 personal values that you think that you have consciously or subconsciously infused into whatever you did, like be it Plaksha or be it your foundation or be it your business? देखो, I would say you are saying the top 3, so I would say top 3 में सिर्फ ये है to give it back to society, to give it back to society, to give it back to society. You got to have this feeling. अगर आपके अंदर ये फीलिंग नहीं है, आप किसी भी एफर्ट में आप सक्सीड नहीं करोगे. आपका कहीं ना कहीं इंटेंट पे क्वेश्चन आ जाएगा. आपका वो एफर्ट जो आप कर रहे हैं वो डाइवर्ट हो जाएगा, वो मटेरियलिस्टिक हो जाएगा. एंड मतलब पीपल ऑल्सो स्मार्ट, they can sense it. And then you can't expect God to be on your side to make you successful. So I think up today, if you see the vaccination camp that we are doing at the Sukna Lake, it's running for the last 5-6 months. हमने start किया था बड़ी मुश्किल, and I'm thankful to advisor साहब, उन्होंने हमें permission दी. मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था, पर when he came in, he liked the idea, so I thought let's do it for a month. मेरे को कहीं ना कहीं लगता था कि it could be successful. You could feel. Because जब मैंने कोविड सेंटर हमने बनाया था यूनाइटेड सिक्स के साथ मिलके सेक्टर 43 में, so that actually gave me a lot of satisfaction because we were of use to many COVID patients. तो मेरे को भी ये लग रहा था कि when everybody is saying that vaccine is the only solution, so why not just spread the reach? And I thought कि maybe Sukna Lake is one area wherein लोगों को लगेगा ओपन में है तो वहाँ पे हम लगवा लेंगे. तो but the people were claustrophobic about getting into the indoors also, and everybody is not comfortable with the word hospital जाके वैक्सीनेशन लगाना है, क्लिनिक जाके लगवाना है. तो मैं क्या मेक शिफ्ट ना इतना, जैसे हमारे PhD में हम एग्जीबिशंस करते हैं, जो जिस तरह का एक VIP लाउंज वगैरह बनता है, मैं लेट मी क्रिएट समथिंग लाइक दैट एंड लेट डॉक्टर्स बी देयर ऑफ द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वी डू अ जॉइंट काइंड ऑफ एन दिस थिंग. सो एडवाइजर साहब लव्ड द आइडिया एंड ही सेड गो अहेड. तो मैंने तब मेरे को शायद पता होता तो मैं ये सारा सेटअप खरीद ही लेता. अब आई डोंट नो रेंटल पे है, क्या होगा इसका कल को. I think I'm going to end up paying much more than the cost of it. But yes, but it is so satisfying. But every day we do 100 plus. Beach mein we started doing 200, 300, 400, 500 per day. Wow. So, and more than that, now I'll tell you why these things keep me going. A lot of people go for a walk. The next few time the center is shut. Yeah. But people do, when they see Karan Gilhotra Foundation written, so people who know me, they click pictures, they send it to me, good job son, good job brother, लगे रहो. So वो जब मैं उठता हूँ अपना, जब भी 9-10 बजे तक मैं वो खोलता हूँ मैसेजेस, और मेरे को ऐसे मैसेजेस चाहे whether it's top bureaucrats, top honorable judges, or my own family circle, my social circle, तो इतना अच्छा लगता है कि यार के, और फिर वो लोग आपस में बात भी करते हैं यार कि देखो यार के करना सब चाहते हैं, बट ये लड़का करता है. बिकॉज टू सेट अप दैट सेंटर, यू ऑल्सो
need monetary support, you need that intent, because उसमें हमने volunteers हैं हमारे पास जो रोज आके लोगों को social distance help भी करते हैं, queue up भी करते हैं, तो मतलब it's a task, पर वही बात है ना कि दुआएं उसको चलाती रहती हैं. So there are very less people who do, जो doers होते हैं बहुत कम होते हैं, thinkers बहुत सारे होते हैं, and just want to thank you for your service to the community. नहीं, I think everybody is a thinker and everybody is a doer. सिर्फ ये है कि किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता, बट पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आप थ्रू योर चैनल दैट प्लीज़ एंड प्लीज़ वट एवर वी कैन डू फॉर अदर्स, we should try to do the maximum in our lifetime, because I have been on this journey for the last, I would say, 15-20 years. There is nothing more satisfying anybody can have than those blessings. That's my own belief. So you have been doing stuff that my generation is very hesitant to. You have been a Sarpanch. Right now, my moving abroad and very hesitant to join politics. And through our podcast, we have been trying to, change the image of politics जो लोगों के दिमाग में बनी हुई है. Second, you have been giving back or taking your responsibility up for the community. But again, my generation is chasing money. So what would be your advice? Like, how do you balance this for anyone who is in their early 20s? देखो वैसे ना, again I said कि I can only say that what has been my experience. Yeah. And if somebody finds that yes, I lead a content life and I am doing good for myself, and so they can probably try that. But today's generation, too much of gyan you cannot give. they would do what they like doing the best. And probably they'll do exactly the opposite. Yeah, no, but fine. So they might choose that path. And as I said, you should do whatever you want to do, whatever keeps you going. Because if you will do something that I will tell you or somebody else will tell you, you will never succeed on that. आपकी गाड़ी crash होएगी. So my only thing is कि please and please only do what you can do with that killer instinct. मतलब जो कहते हैं ना, जिसका कीड़ा हो आपको, जिसका आपको जुनून हो, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना टाइम और अपने रिसोर्सेज को दूसरों के लिए लगाओ. इट्स नॉट दैट कि आपको यू हैव टू गो टू टेम्पल और यू गो टू ओपन अ फाउंडेशन. इवन द पीपल हु आर गोइंग टू बी वर्किंग विद यू और फॉर यू, you can help those people also. Try improve their life, their family's life, and because that is what is needed today. इंसान के लिए आगे बढ़े. That's it. मतलब in whatever role. So thank you so much for your time, and I wish you all the luck for all the endeavors that you take up. No, thank you so much. Thank you so much. Thank you.